Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are safe and sound in your homes, washing your hands regularly, wearing mask whenever you all are stepping out of your homes. So children, let's begin with our circle time. How do we start? कैसे करते हैं हम लोग हमेशा circle time? We sing a good morning song. Ready? चलो, let's begin. Good, 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 good morning. Wake up to the brand new day. Good, 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 good morning. It's a beautiful day. Hello, sunshine. Very good. What do we do next? You always saying days of the week to find out what day is it today. So ready? Chalo. Remove your 7 fingers. Put your 7 fingers out. Ready? Chalo. Let's sing. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. One more time. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days of the week. 7 days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So children, think and tell me what day is it today? Yes, think. Yes, today is Thursday. So boys and girls, let's cheer for Thursday. Ready? Today is Thursday. Today is Thursday. All day long. All day long. Thursday, Thursday, Thursday. Thursday, Thursday, Thursday. Learning is fun. Learning is fun. Hello Thursday. Very good. So children, आज हम सर्कल टाइम में देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने वेजिटेबल्स लर्न किया, हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में पढ़ाई की, राइट? सो आज हम लोग देखेंगे वेयर डज दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो. दे ग्रो ऑन द प्लांट्स. तो चलो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देखिए, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस. So see, this is called a plant. अब इसके जैसे हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के भी देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. तो लेट्स सी. देखो, कैन यू सी दिस ग्रीन? यस, दीज आर कॉल्ड लीव. यस, दीज आर कॉल्ड लीव्स. ओके. नेक्स्ट, कैन यू सी दिस पार्ट? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट. देखो, फ्रूट. और ये देखो एकदम छोटा सा ग्रोइंग पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ बड. बड. कैन यू सी दिस लॉन्ग स्टिक लाइक थिंग? देखो, यस, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम. ये देखिए, दिस इज अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे होते हैं ये. दीज आर कॉल्ड रूट्स. रूट्स. और ये देखो, कैन यू सी दिस व्हाइट पार्ट ऑफ द प्लांट? दीज आर कॉल्ड फ्लावर्स. फ्लावर्स. चलो लेट अस सी वन मोर टाइम. लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बड, स्टेम and roots. Yes? Okay? These are the parts of a plant. Did you notice this flower? Yes. So children, today in circle time, we are also going to see different types of flowers. Are you ready for it? Chalo, let's see अलग अलग type of flowers. See? Yes. देखो, which flower is this? This is called sunflower. Sunflower. Look here. Rose. Rose. This is called morning glory. Morning glory. Okay. Next we have lotus. See, ये हमारा national flower भी है. Lotus. What's next? Calendula. What flower is this? Calendula. Then we have jasmine. Yes, jasmine. Lily. Lily. Daffodil. See? Daffodil. So let's see the flowers on this page. Sunflower, rose,
morning glory, calendula, lotus, daffodil, lily and jasmine. Should we see few more flowers? Chalo, see, these are called lavender, lavender, hibiscus, hibiscus, poppy, poppy. These are called tulip, tulip, orchid, orchid, pansy, pansy. देखो इस पेज पे न्यू फ्लावर्स जो है लैवेंडर, हिबिस्कस, ट्यूलिप, पॉपी, ऑर्किड एंड पैंसी. यस, क्या ये बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स थे? यस. सो इन सर्कल टाइम आज हम लोगों ने दो चीजें देखी. वी सॉ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ऑल्सो वी सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स. यस, प्लांट्स में क्या पार्ट्स देखे हमने? लीफ, fruit, flower, stem and roots. These are 5 main parts of a plant. Plant के सबसे 5 important plant parts हैं. Okay? All right. So that was all for circle time today. Are you ready for the writing work? Chalo. All right. So that was all for circle time today. And in maths, we are going to learn the number names. Are you ready for it? चलो, मेरे पीछे पीछे आपको नंबर नेम बोलना है. रेडी? चलो. व्हाट नंबर नेम इज दिस? 1. ONE 1. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कुछ नंबर नेम्स रिवाइज करे थे, राइट? सो दिस इज नंबर 1. ONE 1. व्हाट कम्स आफ्टर नंबर 1? वी हैव नंबर 2. TWO2. This is number 2. What's the number name? TWO2. What comes after number 2? We have number 3. What's the spelling? THREE. 3. One more time. THREE. 3. What comes after number 3? We have number 4. FOUR 4. Yes? FOUR 4. What comes after 4? We have number 5. And what's the number name? FIVE 5. Yes, it's FIVE 5. What comes after number 5? It's number 6. SIX 6. One more time. SIX 6. Very good. What number do I have after number 6? It is number 7. और देखो इसका क्या स्पेलिंग है? SEVEN 7. One more time. SEVEN 7. Very good. What comes after 7? We have got number 8. EIGHT 8. One more time. EIGHT 8. Very good. What comes after number 8? We have got number 9. And what's the spelling? NINE 9. One more time. NINE 9. And the last one is TEN 10. One more time. TEN 10. Very good. So children, in the same way, we are also going to write this number names into our books. Are you ready for the writing work? Chalo, let's begin. Alright, so parents will open the page जहाँ आज का डेट पुट किया हुआ है. Yes, and जिस तरीके से हमने ये नंबर नेम यहाँ लिखा है वही सेम नंबर नेम्स आप बच्चों को यहाँ कॉपी करने बोलेंगे. जैसे 3030. देखिए स्पेलिंग. लेट द चाइल्ड रीड दिस. THIRTY 30. What's the spelling of 40? 4040. What's the spelling? FOURTY 40. 5050. And what's the spelling? FIFTY 50. और देखिए ये हमने लास्ट टाइम भी किया था ये स्पेलिंग
20. TWENTY 20. ये सेम स्पेलिंग बच्चों आप यहाँ कॉपी करवाएंगे, बच्चों से आप यहाँ कॉपी करवाएंगे. यस. और यहाँ 21. सो 20 का स्पेलिंग यहाँ है. अभी अभी हम लोगों ने जस्ट नंबर 1 to 10 रिवाइज किया है. सो पेरेंट्स आप बच्चों से यहाँ स्पेलिंग बिल्ड करवाएंगे. सी जैसे 21 तो 20 का स्पेलिंग यहाँ से TWENTY. Put a small dash. What's the spelling for number 1? It's ONE1. Yes? उसी तरीके से देखिए 32. तो आप पूछिए बच्चों से, सी where is the spelling of 30? Here. So write down THIRTY 30 small dash and we write the spelling of number 2. Yes, TWO2. So आप इसी तरीके से ये पूरा पेज बच्चों से कंप्लीट करवाएंगे. ओके, व्हाट डू वी हैव ऑन द नेक्स्ट पेज? नेक्स्ट पेज पे हम लोगों को नंबर्स लिखना है 5151 to 100. यस, आप इसी तरीके से 1 by 1 यू विल राइट. आई जस्ट डू 1 फॉर यू. बीच में गैप रखने की जरूरत नहीं है. यू विल राइट 1 बिलो द अदर. 5252, 5353, 5454, 5555, 5656, 5757, 5858, 5959 and 6060. यस, इसी तरीके से आप 61, 71, 81, 91 से लेके 100 तक यू विल कंप्लीट दिस. Complete this both the pages and share the photo in the school group. Okay? And now children, it's time for rhyme. So children, we have just completed our writing work and now it's time for rhyme. Are you ready for it? Today we will sing a rhyme on flowers. Yes, are you ready? Yes, we will sing a rhyme on flowers. 1, 2, 3 and let's begin. Roses are red, yellow and pink. The lotus in the pond does not sing. Yellow sunflowers face the sun. Flowers are liked by everyone. Colorful tulip is so bright. Sweet smelling jasmine is completely white. In many, many colors, hibiscus is found. With petals wide open, it looks big and round. Yes, so this was the rhyme for flowers. Should we sing it one more time? Chalo, let's begin. Roses are red, yellow and pink. The lotus in the pond does not sing. Yellow sunflowers face the sun. Flowers are liked by everyone. Colorful tulip is so bright. Sweet smelling jasmine is completely white. In many, many colors, hibiscus is found. With petals wide open, it looks big and round. Yes? So देखो हम लोगों ने पोएम में कौन से फ्लावर्स के बारे में बात किया है. We have spoken about rose, lotus, sunflower, tulip, hibiscus and jasmine. Okay? So children, you will revise your concepts. Yes, you will learn all the flower names. You'll complete the writing work and share the photograph in the school group and you'll learn this rhyme. Okay? So I'll see you next week. Till then, bye-bye.